So if we want to revise the previous thing, the first of all, the most important one is we see two type of resistance is there. One is called the reactance due to inductor or inductive reactance, which is represented by omega L. Another one is the reactance due to capacitor, which is represented by 1 by omega C. And one more thing, if we see the phasor diagram, if you remember the phasor diagram, so in this phasor diagram, this one is my input EMF, and this one is my pure resistance, inductive current lag by 90 degree, capacitive current lead by 90 degree. Similarly, if we want to draw for the voltage, in that case, this is my input EMF. With respect to that input EMF, for voltage due to resistance are in the same direction. Now, voltage due to inductor exactly opposite of the voltage due to current due to inductor. So here the current due to inductor is downward. So voltage due to inductor is upward. And voltage due to capacitor is downward. Clear, everyone? Both are 90 degree from the, because these are very, very important key to understand the AC. Up to this, is it okay, everyone? Yes, sir. Okay. So if it is okay for everyone, so the next very, very important thing is, especially my main concentration today, or my main topic, two topics are there mainly. One is reactance, which is represented by the symbol X. What do you mean by that reactance? Reactance means it is the resistance. It is the total resistance of inductor and capacitor. It is the total resistance of inductor and capacitor. Okay. It is the total resistance of inductor and capacitor for a AC circuit. That means in suppose in your alternating circuit, that means you may have resistor, inductor, capacitor. So the total resistance offered by inductor and capacitor overall is called the reactance. Clear, everyone? So if I draw a inductor and if we draw a capacitor, and if we connected it with a input source, very, very important, try to understand. E is my EM sine omega t. Suppose I is the current, incoming current, outgoing current, incoming current. Suppose the voltage of this one is inductor and voltage of this one is capacitor. I'm just giving you a question, like suppose voltage of the inductor is 10 volt and voltage of the capacitor is 5 volt. So what is my total voltage? Anyone please tell me what is my total voltage in that case? Anyone? Please respond. Bani brother, ball. Are bhul thik ball to. অসুবিধা হচ্ছে বুঝতেছি। আমি অসুবিধা জিজ্ঞেস করি তো, আমার বলছি তোর কি মনে হচ্ছে কত ভোল্টেজ হওয়া উচিত? ভোল্টেজ ডিউ টু ইন্ডাক্টর 10 ভোল্ট দেওয়া আছে, ভোল্টেজ ডিউ টু ক্যাপাসিটর 5 ভোল্ট দেওয়া আছে।
টোটাল ভোল্টেজ কত হবে? তো 15 হওয়ার কথা যদি প্লাস করি। হ্যাঁ, এবার দেখ, two things are there. This voltage given, this voltage are always the, this voltage always are RMS value, always. মানে in our AC circuit, if they are not mentioned about the peak, or if they are not given in the sinusoidal form, if they give you voltage and current, this voltage and current are always in AC. Suppose मैंने बोला कि मेरे घर पे एक ट्यूब लाइट है जिसमें 1 एम्पियर करंट आ रहा है, सो 1 एम्पियर करंट इज द आरएमएस वैल्यू। मेरे घर में एक एसी है जिसमें 15 एम्पियर करंट आ रहा है, तो 15 एम्पियर इज द आरएमएस वैल्यू। मेरे घर पे एक टीवी है जो कि 220 वोल्ट में चलता है, so 220 is the RMS value. So unless I am saying the peak value is this much, or I am giving it in terms of peak value or maximum value, or I am giving it in that term, okay, the value is in RMS value. और ऐसा रहेगा जैसे 200 sin omega 2, then this 200 is the peak value, okay. Otherwise these all values are RMS value. This is the first thing. But here देखो, ये दोनों को देख के मुझे लग रहा है द आंसर इज 15, बट दैट इज द रॉन्ग आंसर, इट्स नॉट 15। क्यों? देखो, अभी मैंने तुम लोगों को अभी जस्ट तुम लोगों को मैंने बोला कि शायद तुम लोगों ने गौर नहीं किया कि ये मेरा है इनपुट ईएमएफ, ये एंगल है थीटा। इन केस ऑफ pure inductor, inductive voltage lead by 90 degree and inductive capacitor lag by 90 degree. Yes or no? Yes, sir. So they are same direction or opposite direction? Opposite. So net voltage you add or subtract? तो subtract. Subtract. और ये जो net voltage you subtract, that is called the reactance, voltage due to reactance. That is voltage due to inductor minus voltage due to capacitor. पहले इंडक्टर को क्यों लिखते हैं? क्योंकि इंडक्टर लीड किया, लीड वैल्यू माइनस लैग वैल्यू। क्लियर? Yes, sir. अब देखो, तो यहां से हम क्या लिखेंगे? इफ आई इज द करंट, इट्स द सीरीज कनेक्शन, सो आई इज द करंट एंड एक्स इज माय टोटल रिएक्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंस? The total resistance by the inductor and capacitor. सर्किट में टोटल जितना इंडक्टर है, सर्किट में टोटल जितना कैपेसिटर है, दोनों का रिजल्टेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द रिएक्टेंस। दैट इज करंट इनटू एक्सएल, करंट इनटू एक्सी। अब देखो, आई कैंसिल, तो ये बेसिकली करंट या वोल्टेज नहीं, ये बेसिकली एक्सएल एंड एक्सी है। ये सर नो? Yes, sir. तो अब देखो, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता। लाइक इफ VL इज ग्रेटर देन VC, सो नेट वोल्टेज मेरा किधर है? नेट वोल्टेज मेरा इधर है ना? इफ VL इज ग्रेटर देन VC माने 10 and 5 है ना? Yes, sir. सो इसका मतलब क्या है? XL इज ग्रेटर देन XC, करंट तो सेम जा रहा है। सो इफ माय नेट वोल्टेज इज इन दिस डायरेक्शन, that means XL is greater than XC। माने अगर XL is greater than XC है तो मेरा क्या हो गया? फेज डिफरेंस जो है, फेज एंगल जो है वो क्या करेगा? लीड करेगा। और अगर मेरा नेट वोल्टेज इधर हो गया, इसका मतलब क्या? XC is greater than XL। Yes or no? Yes, sir. So if my XL is greater than XC, it will be lead by 90 degree. If XC is greater than XL, it will be lag by 90 degree. So so from that I can say कि my X is actually XL माने omega L, XC माने 1 by omega C। Clear? Yes. So that means you can understand the reactance. Reactance हलो एक सर्किट का total resistance offered by inductor and capacitor only.
इसमें कोई रेजिस्टेंस को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे. क्लियर? Now, the next one very important topic is reactance. Reactance. यही दोनों आज का मेन टॉपिक है और इसी में मैं आज पूरा क्लास करने का कोशिश करूंगा क्योंकि ये एसी का हार्ट है. अगर ये दोनों समझ गया तो तुम्हारा एसी सब कुछ समझ में आएगा. अगर ये दोनों समझ में नहीं आएगा बाकी पढ़ना बेकार है. So what is reactance? Reactance is defined as total resistance offered by AC circuit. AC मतलब L, R, C सब मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द रिएक्टेंस. क्लियर? क्लियर? यस सर. तो एसी में हम लोग एक्चुअली रेजिस्टेंस बोलते ही नहीं है. एक्चुअली एसी में हम लोग ओवरऑल हम लोग रिएक्टेंस ही निकालते हैं. सो दिस इज माय R, दिस इज माय L, this one is my C. In together, suppose I am connecting with this E equals to EM sine omega t. So this is my I incoming, outgoing, sorry, this is incoming. So this one is VL, this one is VC, and with these two in combined, I can say the whole in combined, the whole is Vx. Yes or no? Which is Vx. I can say the whole VL minus VC. है ना? Yes or no? Yes sir. And this one is VR. So now if I want to see that phasor diagram again, overall in terms of voltage, what I realize, this is my EMF, EM sine omega t. This angle is theta, that is omega t. This one is VR, voltage due to resistance. This one is voltage due to inductor. This one is voltage due to capacitor. Now, among these two, I can say if my net voltage is in this side, that means XL greater than XC. If this voltage is in this side, Vx, XC greater than XL. तुम लोग फॉलो कर रहा होगा. For VL and VC, मैं if word बार बार यूज कर रहा हूं. मतलब दोनों at a time not possible. Either this one or this one. Obviously, मेरा दोनों में से किसी एक का वैल्यू ज्यादा होगा, किसी एक का कम होगा. सो जिसका ज्यादा होगा उसकी तरफ होगा. अब तुम बोलोगे सर अगर इक्वल हो जाए, इक्वल हो गया तो जीरो, सिर्फ VR रह गया. लेकिन अगर हमको Vx चाहिए, दैट मीन्स दोनों में से किसी एक को बड़ा होना पड़ेगा. ये सुन लो. यस सर. अब इसमें से कौन सा बड़ा होगा ये डिपेंड करेगा कि मेरा क्वेश्चन में किसको बड़ा कर रहा है. ये एग्जामिनर का चॉइस है. एग्जामिनर इसको भी बड़ा कर सकता है, ये Vx ये वाला को भी बड़ा कर सकता है, मतलब लीड कर सकता है, ये लैग कर सकता है. और दोनों का अगर हम रिजल्टेंट लेंगे, बिकॉज नाउ VR इज ऑल्सो प्रेजेंट, सो इफ XL इज ग्रेटर देन XC, सो मेरा रिजल्टेंट इधर जाएगा VZ. और अगर XC इज ग्रेटर देन XL, दोनों एक साथ, अगर मतलब कंडीशन अप्लाई, या तो ये, तो ये वाला हुआ तो ये, अगर ये वाला नहीं हुआ, अगर ये वाला हुआ, तो my resultant is in this direction VZ. So my resultant can be lead by phi angle, my resultant can be lag by phi angle. Yes or no? Yes sir. So if we want to
find out now see it's very easy for me कि my total VZ square, that is VR square pure resistance plus VX, ये दोनों का combine, yes or no? पाइथागोरस तो नहीं बोल रहा ना, इसका और इसका रिजल्टेंट. तो my VZ is root under V of R square plus V of X square. I is the current, so I can write I is the current into Z is the total resistance, that is current into resistance ka square plus current into reactance ka square. So from that we get I को बाहर कर सकता है हम लोग, तो R square plus X square. So my Z, that is root under R square plus X square. X क्या है? X क्या है? X है reactance. X क्या है? X है reactance. जिसको हम equals to R square plus XL minus XC का whole square भी बोल सकता है, because X is always XL minus XC. Yes or no? Yes or no? Yes sir. इससे हमें एक चीज पता चला कि ये ना करंट ना वोल्टेज, ये मेनली डिपेंड कर रहा है, ये मेनली डिपेंड कर रहा है इंडक्टर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, मतलब रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस. तो इसको अगर हम ओवरऑल देखें, ये मेरा जो रेफरेंस लाइन है आर, जो कि मेरा इसका ये वाला है, जो मेरा इनपुट ईएमएफ जो है उसके डायरेक्शन में मेरा रेजिस्टेंस रहेगा. इसका परपेंडिकुलर लीड भी हो सकता है, लैग भी हो सकता है, लेकिन उसका परपेंडिकुलर होगा, इतना मुझे पता है कि उसका जो परपेंडिकुलर है, उसका परपेंडिकुलर में मेरा स्ट्रेट लाइन टाना जाए ना, बट चिल्ला में सुंदर होएगा. उसका जो परपेंडिकुलर में x है और ये दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज माय z, और ये जो एंगल है ये मेरा है फेज एंगल. मतलब ये जो मैं बोल रहा था ना कि इट विल बी लीड बाय सम एंगल, इट विल बी लैग बाय सम एंगल, दैट फेज एंगल इज x. तो ये जो पूरा AC है ये इसी का खेला है. कैसे देखो, z इज रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एंड फाई कैसे मिलेगा? tan फाई परपेंडिकुलर बाय बेस. सो फाई क्या है? tan इनवर्स x बाय r. x तुम्हें पता है क्या है, r तुम्हें पता है क्या है. तो जहां तुम्हें z मिल गया, जहां तुम्हें एंगल मिल गया, जहां तुम्हें पता है लीड है कि लैग है, कैसे पता चलेगा? अगर XL ग्रेटर देन XC लीड है, अगर XL लेस देन XC लैग है. ये सब नो. Yes sir. तो जहां तुम्हें ये पता चल गया, वो तुम्हें इनपुट का ईएमएफ देगा, वो तुम्हें करंट पूछेगा, वो तुम्हें फेज एंगल पूछेगा, वो तुम्हें XL पूछेगा, वो तुम्हें XC पूछेगा, वो तुम्हें VX पूछेगा, वो तुम्हें VR पूछेगा, वो तुम्हें VZ पूछेगा. व्हाट एवर दे आस्क यू इन दिस चैप्टर, इन दिस होल AC, यू कैन एक्सप्लेन, क्योंकि तुम्हें रेजिस्टेंस पता है. बेसिक रूल क्या है? वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस. यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो Z है, और Z जो है तुम्हारा R एंड X है. X क्या है? XL एंड XC है. अगर XL ग्रेटर देन XC लीड करेगा, अगर XC ग्रेटर देन XL है तो लैग करेगा. दोनों इक्वल हो जाएगा तो प्योर रेजिस्टेंस हो जाएगा. इसको दिमाग में रखते हुए इफ यू प्रोसीड, यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दैट. जैसे देखो, मैं इसीलिए इसको इस पे देखो, मेरा इफ यू वांट इट्स खत्म, मैं नेक्स्ट में जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम जो नेक्स्ट वाला पढ़ाएंगे नेक्स्ट दिन के लिए, जैसे LR सर्किट, CR सर्किट, LC सर्किट, LCR सर्किट, इसका दुनिया भर का न्यूमेरिकल, कुछ टॉपिक छोड़ के, जैसे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, एवरेज पावर, ये सब को छोड़ के जो बाकी पार्ट है, तुम एनी क्वेश्चन वो सबको बिना पढ़े कर सकते हो. इफ यू नो दिस बेसिक आइडिया, स्पेशली दैट Z1, इफ यू नो दिस Z, ये Z अगर समझ में आ गया है, ये अगर फेज एंगल समझ में आ गया है,
तो यू कैन सॉल्व ये, अगर तुम डायग्राम समझ गया है तो यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल, एंड बिलीव मी यही देता है। तो अगर तुम न्यूमेरिकल वगैरह बिना चैप्टर को पढ़े न्यूमेरिकल वगैरह समझ जा रहे हो, फिर जब थ्योरी पढ़ोगे तो लगेगा दूर इसमें तो कुछ है ही नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट करे, एक ही चीज को बार बार, इसका लीड, इसका लैग, इसका दोनों का। जैसे देखो अगर एक सी नहीं है, ये क्या हो गया, वीएल वीआर, तो दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा एलआर सर्किट। एल नहीं लेंगे, सी एंड आर, ये हो जाएगा सीआर सर्किट। तीनों एक साथ ले लेंगे तो एलसीआर सर्किट हो जाएगा। आर को हटा देंगे, ये आर नहीं रहेगा, वीएलसी होगा तो सी एलसी सर्किट। ये करके ये करते जाएगा 2-3 लेक्चर में इसी का न्यूमेरिकल वगैरह ये वो हैंड चलेगा। लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, तुम इसका सब तरह का न्यूमेरिकल कर लोगे, तो फिर मेरे लिए बाकी पढ़ाना बहुत आसान होगा। नहीं तो बार बार मुझे रिकॉल करवाना पड़ेगा, ये होता है, ये रेजिस्टेंस हो रहा है, तो बोलोगे सर क्यों हो रहा है, ये ऐसा होता है, सर क्यों हो रहा है, ये ऐसा होता है, सर क्यों हो रहा है। यहाँ पे समझ जाओ तो देखो हम लोग उधर वाला बिना पढ़े हम लोग इधर वाला सब सॉल्व कर सकते हैं। So now I'm going to show you some numerical related to that. तुम लोग सॉल्व करो और मुझे बोलो एक एक करके कि क्या ये टफ है, लगेगा क्या इजी है। और अगर नहीं समझ में आएगा ये सब चीज, तो एसी से टफ कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। So I'm giving you one by one. कहाँ गया, या देखो पहला क्वेश्चन बड़ा एक सुंदर सा क्वेश्चन है, एक इस बुक में भी है, आपको यहाँ से क्वेश्चंस कराते हैं। जस्ट 1 मिनट। अच्छा चलो देखो पहला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, क्या बोला है, डिटरमाइन द इम्पीडेंस। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय इम्पीडेंस। एग्जामिनर आस्क यू Z माने टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर of a series LCR circuit, LCR circuit, ठीक है। if the reactance of capacitor, मैंने पहले ही बोला था कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर कितना है, 250 ओम, एंड इंडक्टर रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर 220 ओम respectively, and R is 40 ohm. So XC is 250, XL is 220 and R is 40. तुम्हें वो इम्पीडेंस पूछा है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा, that is XC minus XL। और देखो यहाँ पे XC is greater than XL, तो लीड करेगा या लैग करेगा। ओवरऑल इफ यू वांट की लीड और लैग करेगा या लीड करेगा, हालांकि इसमें पूछा नहीं है, लेकिन क्या करेगा, लैग और लीड। बाबू याद रखना पड़ेगा, तुम लोग याद ही नहीं रखना चाहता है। देखो एक्सेल ग्रेटर देन एक्सी लीड, एक्सी ग्रेटर देन एक्सेल लैग। जो जीना नहीं चाहता है उसको डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है। डॉक्टर तभी पेशेंट को बचा सकता है जब पेशेंट जीना चाहता है। सिनेमा में कहता है ना, उसको जीने का इच्छा चला गया है तो जीने का वजह दिखाओ उसको, तब वो जिंदा रहेगा। वही बात तुम लोगों के साथ भी है। देखो एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सेल, अब बोलो ये लीड होगा कि लैग होगा, लैग। समझ में आया। तो तुम देख के ही समझ में आएगा, अच्छा ये लीड होगा, अच्छा ये लैग होगा। ये दिमाग में जितना ये सब हिट करोगे उतना तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। सो दैट इज 220 माइनस 250, that is minus 30 ohm. So you can say also कि reactance can be positive or negative in terms of कि inductive और capacitive, ठीक है। लेकिन मेरा जब impedance का कहानी आएगा r square plus x square, so 40 का स्क्वायर प्लस माइनस रहे या प्लस रहे, इसका जब स्क्वायर करोगे तो तुम चाहो तो इसको, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मॉड में लिख के 30 कर दो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो नेगेटिव करो या पॉजिटिव करो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये हो गया 400 प्लस 900, सॉरी 1600 प्लस 900, दैट मीन्स 50 ओम। यस और नो? Yes, sir. So I think you understand the first question.
समझ में आया? Yes, sir. Now see the second question. I just want to show you some question कि जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये लोग पूछ क्या रहा है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें ये जितना कॉन्फिडेंटली बनाओगे एसी उतना ही इजी लगेगा. इसको समझ में नहीं आएगा, ये मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा, एसी तुम्हारा लगेगा सबसे घटिया चैप्टर है. हाँ, लेकिन ये बिलीव मी एसी सबसे आसान तरीका. और तुम सिलीगुड़ी में ट्राई कर लेना. इस तरह से एसी सिलीगुड़ी में क्या इंडिया में पढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास ऐसा भी हुआ है, बहुत बच्चा बाहर से आया है, वो लोग इवन बोला है सर ऐसे करके एसी किसी ने नहीं बताया, सब ऐसे करके एसी नॉर्मल प्रोसेस में बताया, इतना शॉर्टकट फॉर्मेट में कि यही मेरा मेन चीज है, ऐसे करके एसी किसी ने नहीं बताया. हाँ. ये मेरा नहीं, स्टूडेंट का कहना है, बाकी तो मैं कभी किसी के साथ कंपटीशन में जाके चेक नहीं किया हूँ कि हु इज द बेस्ट. रेजिस्टेंस ऑफ 50 ohm, a resistance of 50 ohm and an inductor that is 20 by 5 pi Henry and a capacitor that is pi by 5 by pi microfarad are connected in series to a voltage of 230 volt and 50 hertz. ठीक है. What is the question? Find the impedance. Find impedance. Impedance मतलब Z कितना है. अच्छा देखो यहाँ पे जैसे impedance पूछा है, if we want we can make it थोड़ा large. क्या impedance निकालो तुम, इसमें करंट कितना है निकालो. तीसरा नंबर में है, मैं बोल सकता हूँ वोल्टेज ड्यू टू रेजिस्टेंस क्या है, वोल्टेज ड्यू टू इंडक्टेंस क्या है, वोल्टेज ड्यू टू कैपेसिटेंस क्या है, वोल्टेज ड्यू टू एक्स क्या है, ये निकालो. और वोल्टेज ड्यू टू जेड क्या है. वोल्टेज ड्यू टू जेड और ये सेम होना चाहिए, है कि नहीं, बोलो. ये सब नो. Yes, sir. अब सबसे पहले मुझे बोलो ये जो वोल्टेज है ये कौन सा वोल्टेज है, पीक वोल्टेज है कि आरएमएस वोल्टेज है. अभी बताया, जल्दी से बोलो ना. RMS. आरएमएस ऑलवेज. जब तक पीक मेंशन नहीं किया, मेरे घर में 5 एम्पियर का एक वायर है एसी करंट के लिए, मतलब आरएमएस वैल्यू. वेरी गुड. सो दिस वोल्टेज इज माय आरएमएस वोल्टेज. तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले एक सेल चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला? ओमेगा एल. ओमेगा का मतलब क्या होता है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी एल. मैंने फ्रीक्वेंसी में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि मेरा वैल्यू फ्रीक्वेंसी में दिया है. इफ माय वैल्यू इज गिवन इन ओमेगा, आई एम राइटिंग डायरेक्टली ओमेगा. इफ माय वैल्यू इज गिवन इन फ्रीक्वेंसी, आई एम डायरेक्ट राइटिंग फ्रीक्वेंसी. तुम लोग को मैं एक हिंट दे देता हूं. ओमेगा को कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज किया है तो ओमेगा लेना, फ्रीक्वेंसी यूज किया है तो नॉर्मल लेना. फ्रीक्वेंसी अगर नहीं बोला है सिर्फ, या फ्रीक्वेंसी बोल के कर रहा है, अगर हर्ट्ज में दिया है तो फ्रीक्वेंसी यूज करना, अगर रेडियन पर सेकंड में दिया है तो ओमेगा यूज करना. क्लियर? समझ में आया? ये सब छोटा छोटा बेसिक सेंस है कि हमें लेना क्या है. क्लियर? Yes, sir. क्योंकि देखो दोनों का डायमेंशन एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर पता कैसे चलेगा ओमेगा लेंगे कि न्यू लेंगे. हर्ट्ज लिखा है तो फ्रीक्वेंसी, रेडियन पर सेकंड लिया है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो देखो 2 पाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 50. और देखो एग्जामिनर कितना अच्छा है, तुमको ऐसा अच्छा वैल्यू दिया है कि वो इजीली कट जाए. तो ये कट के कितना हुआ, देखो पाई पाई कट गया, तो ये हो गया 2000 ओम. नाउ व्हाट अबाउट XC? 1 by omega C. That is 1 by omega. Omega is how much? Omega is 2 pi frequency C. That is 2 pi 50. C कितना है? 5 by pi micro, माने 10 to the power minus 6. मैंने फिर से पाई पाई कट दिया, इसको ऊपर चले गया 10 to the power 6. यहाँ पे देखो 50 और 200 into 5, तो ये क्या हो गया 10 to the power 4 by 5. That is 2 into 10 to the power 3.
that is 2000 ohm. Clear? Yes or no? So Yes. देखो, जब XL इक्वल्स टू XC, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, जब दोनों इक्वल होता है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है जिसको बोला जाता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में कब होता है? व्हेन XL एंड XC इक्वल हो जाता है। तो वो तुम्हें पूछ सकता है व्हाट इज रेजोनेटिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखो, बिना कुछ जाने हम लोग निकाल सकते हैं। ये एंगुलर हो गया 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 1/2 पाई। निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो। ये सब नो। Yes, sir. लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए अभी, मैं तो जस्ट ऐसे ही कि बाद में ये सब का जरूरत पड़ेगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा, अभी समझ में आएगा। तो मेरा एक्सिस का मतलब क्या हो गया? XL माइनस XC, दोनों का वैल्यू सेम है, तो मैं सिंपली बोलूंगा 0। तो मेरा Z क्या हो जाएगा? R² प्लस X², दैट इज R² प्लस 0, दैट इज R, माने प्योर रेजिस्टेंस। यही तो क्वेश्चन था, व्हाट इज इम्पीडेंस, तो कितना है? R, है ना? ये सब नो। R का Yes, वैल्यू कितना दिया है? 50, तो ये कितना हो जाएगा? 50, दैट इज, हो गया ना? अब मैंने जब देखा कि इतना आसान क्वेश्चन दिया है, मुझे पहले से पता चल गया कि ये आसान क्वेश्चन है। जहाँ मुझे पता चला कि ये आसान क्वेश्चन है, मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन और दे दिया। तो ये मेरा पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो, मुझे बोला है करंट, तो मैं करंट क्या निकालूंगा? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हमें हमेशा एसी में Z से रिप्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि ये प्योर रेजिस्टेंस है, ये एसी का रेजिस्टेंस है, विच इज इक्वल्स टू R। क्यों? क्योंकि मैंने इक्वल कर दिया है। तो मेरा रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना था? एनीवन प्लीज टेल मी, मुझे तो स्क्रॉल करना पड़ेगा। 230। सो मेरा 230 था बाई 50, तो 23/5 एम्पियर। ये सब नो, ये सब नो। yes, sir. जहां मैंने करंट निकल गया। अच्छा, एनीवन टेल मी दैट करंट इज व्हिच वैल्यू, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू? RMS. वेरी गुड। अगर इसी क्वेश्चन में, मानो इसी क्वेश्चन में सब टॉपिक में बोलता पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो घबराना नहीं था। I, that is I maximum by root 2. So I maximum is कितना आया तुम्हारा? 23/5 into √2 एम्पियर। समझ में आया? Is it clear? Yes, sir. So once you get the current, इससे आसान तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा नंबर 3 में बोला है VR कितना है। अच्छा, और क्या क्या पूछा था, एक बार चेक कर लेता है। VR, VL, VC, VX, VZ। VR नंबर 4, VL नंबर 5, VC नंबर 6, नंबर 6, VX नंबर 7, VZ। देखो इसमें से, क्योंकि मेरा X 0 है, मैं तो कुछ कुछ तो बिना कैलकुलेशन का 230 वोल्ट, क्योंकि V जो है, समझा करो, मेरा जो ये है यही VZ हो गया ना टोटल, और यही VR भी हो गया, क्योंकि XL माइनस XC तो 0 है ना? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब मैं बाकी का कैलकुलेशन ही नहीं करना है। करोगे तो वही आएगा, करके देख लेना। 23/5 into 50, यही आना है, आना ही है।
ये दोनों को मैं बता रहा हूँ, Vx मेरा 0 आ जाएगा क्योंकि x 0 है, एंड Vr फिर से वही आ जाएगा 230 वोल्ट। सिर्फ VL एंड VC क्या है, 23/5 इंटू 2000 वोल्ट, 2000 ओम, दैट मच वोल्ट। और ये क्या हो जाएगा, 23/5 इंटू 2000। क्यों? क्योंकि VL क्या हो गया, करंट इंटू XL, करंट इंटू XC, और दोनों का वैल्यू इक्वल है, तभी Vx 0 है। समझ में आया? तो देखो क्वेश्चंस में कुछ है, इफ यू अंडरस्टैंड कि पूछ क्या रहा है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में बोलता व्हाट इज द फेज एंगल, तो देखो फेज एंगल फाई मैंने क्या बताया था, tan इनवर्स x बाई r। सो tan इनवर्स x का वैल्यू 0, 0 बाई r, 0 बाई r इज व्हाट, tan इनवर्स 0, 0 का मतलब कितना होता है, 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये प्योर रेजिस्टेंस हो गया है। व्हाट डू यू मीन बाय प्योर रेजिस्टेंस, इनपुट ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस आर इन द सेम फेज। तो सेम फेज मतलब फेज डिफरेंस कितना, 0 डिग्री, है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो तुम ही लोग सोचो, एक क्वेश्चन से मैंने कितना क्वेश्चन बनाया, एक ही क्वेश्चन से मैंने 8 क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। समझा? यस सर। चलो और क्वेश्चन उठाते हैं, just wait। और क्वेश्चन, अच्छा देखो, यहाँ पे एक काफी सुंदर सा क्वेश्चन है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर इतना ज्यादा सिर्फ इसीलिए इतना प्रेशर कर रहा हूँ क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो एसी तुम्हारा बाएं हाथ का खेल है, लगेगा। सबसे इजी चैप्टर एसी का है, सबसे इजी चैप्टर। देखो द क्वेश्चन इज दैट when an inductor and resistance are connected in series, when an inductor and the resistance connected in series with the AC source, connected in series across a 12 volt and 50 hertz supply. Anyone tell me, ये जो 12 volt है पीक वैल्यू है कि आरएमएस वैल्यू है? आरएमएस। वेरी गुड। जब तक मैं, अगर मैं इसको ऐसे करके देता 12 साइन ओमेगा टी और कुछ वैल्यू देता तब ये पिक होता, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट वैल्यू दिया है। डायरेक्ट करंट एंड वोल्टेज का वैल्यू देने का मतलब है पिक वैल्यू, अनटिल वो बोल नहीं देता है कि पिक वैल्यू, ठीक है। अच्छा, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यहाँ पे 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। करंट का वैल्यू किसमें है, किसमें है करंट का वैल्यू? तुम लोग चुप क्यों हो जाते हो? Am I audible? यस सर। करंट का वैल्यू ये क्या है, आरएमएस है कि मीन वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है? सर आरएमएस। आरएमएस। तो जितना बार बोलेगा उतना बार बोलो, दिमाग में घुसेगा, ठीक है। द करंट डिफर इन फेज फ्रॉम द अप्लाइड वोल्टेज, करंट डिफर इन फेज फ्रॉम द अप्लाइड वोल्टेज बाय एन एंगल पाई बाई 3। तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 3। क्या कैलकुलेट करना है, calculate R. So I'm not giving you any hint. You first. कत हलो? सर 12 হবে। Very good, very good, very good. That first of all, tan phi, that is x by r, that is tan pi by 3, that means root 3. That means x is equals to root 3 r. एक बार
V is equals to IZ. So Z is equals to voltage by current. Both are in RMS. So I don't have any problem. That is 24 ohm. That is equals to R square plus X square. And X is how much? X is root under root 3 by R whole square. So R square plus 3R square equals to 4R square, that is 2R. So Z is equals to 2R, R is equals to 24 by 2, that is 12 ohm. Yes or no? Yes. इसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें एक्सेल पूछता तो थोड़ा सा टफ हो जाता, बिकॉज टफ इन द सेंस ऑफ कैलकुलेशन. ओमेगा एल, यहां से अगर तुम्हें एल पूछता, so then it is a little bit calculative. क्यों? देखो, XL you know the value root 3R, because here XC is not there. So X is XL minus 0, that is XL, which is root 3 into 12. So L is what? L is 12 root 3 by 2 pi frequency omega. So 12 root 3 by 2 pi er value 3.14, and frequency is 50 hertz. So that much Henry. So a calculation একটু সময় লাগবে বলে এক্সামিনার দেয়নি. এই কোশ্চেনটা সিবিএসসি বোর্ডে এসেছে. বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। স্যার ওমেগার ভ্যালুটা আরেকবার বুঝিয়ে দাও না, রুট 3টা। আরে ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে তো, ওমেগা হচ্ছে 2 পাই ফ্রিকোয়েন্সি. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। টাইম পিরিয়ড হয় 2 পাই বাই ওমেগা, ফ্রিকোয়েন্সি হয় 1 বাই টাইম পিরিয়ড, that is omega by 2 pi. So omega is 2 pi frequency. That is the relation between angular frequency and frequency. Okay? Yes sir. Okay. I'll add a question. Next question. এই পার্টটা হয়ে গেলে বাকি তো ঝড়ের মতো শেষ হবে. এটাই আসল জিনিস. Question. That in the circuit shown in the figure, the potential difference across a inductor and resistors are, the inductor আছে, one resistance you have, connected with an AC source. The potential difference across the inductor and resistance are 120 and 90 volt, 120 volt and 90 volt. So what is the question? Respectively, and the RMS value of the current is, RMS value of the current is 3 ampere. মানে এটি 3 ampere হয়ে গেল. Calculate impedance of the circuit. Number 1, find out Z. Number 2, phase angle between the current and voltage. Phase angle between the current and voltage. If you want, you can ask you the, what is the input voltage? So input voltage is your VZ. Yes or no? Yeah, V. তাই না? Yes sir. আরে যদি তুই কারেন্ট পেয়ে গেলি, যদি তুই জেড পেয়ে গেলি, কারেন্ট ইনটু জেডই তো ভি. এটা জিজ্ঞেস করা না করা একই ব্যাপার, তাই না? Yes sir. তো দেখো, what about V? V is root under V of R square plus V of X square. As it is a LR circuit, so XC 0 নেই, so X কত? XL minus XC, that is XL, তাই না? তাহলে V কত হয়ে যাচ্ছে? V হয়ে যাচ্ছে V, that is VL দেওয়া আছে কত? 120 ভোল্ট. সো এটা কত হয়ে যাচ্ছে? 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर. तो 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर कितना होता है? 9×9 81, 14400. I think when you calculate this, you get 150 volt. Yes or no?
So total voltage is 120, that is your overall voltage. এটা বলেনি কারণ এটা তোকে বার করতেই হবে, সেজন্য ওরা বলেনি। So V is equals to I into Z. So what is my Z? V by I, that means V is how much? 150, I is how much? 3, তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে? 50 ohm, তাই না? Yes, sir. Now see this one. 5. So you can solve it by two methods. One, x by r. So for that you need x. এখান থেকে x বার করতে পারিস। x মানে tan inverse xl by r, because x is xl. So as you know 120, as you know current. So current into xl. So xl ya x, that is 120 by 3. কত যাচ্ছে? 40 না? Yes or no? Yes, sir. And VR, that is current into resistance, that is 93 into R. So R is 30. So you can write tan inverse 40 by 30. Class 11 first lecture, tan inverse 4 by 3 কত হয়? 53 degree, তাই না? হ্যাঁ স্যার। এত কষ্ট না করে I can use it in a different manner. Tan inverse x by r, তো আমি যদি কারেন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে? vx by vr না, তাই না? Yes, sir. আর এখান থেকে এটা থেকে তো তাই বার করলাম না, আমি না বার করলে ডাইরেক্টলি তো লিখতে পারতাম 120 by 90। আমি ডাইরেক্টও করতে পারতাম না, কারণ Yes, sir. কারেন্ট তো সেমই যাচ্ছে সবার মধ্যে, বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। x by r, that means vx by vr, because you multiplied by the current. তো কাছে ভোল্টেজ আছে, তো আমি আবার রেজিস্ট্যান্স কেন বার করব? আমি ডাইরেক্ট ভোল্টেজ দিয়েই করব। আমি রেজিস্ট্যান্স বার করেও করতে পারি, বাট ইট টেকস সো মাচ টাইম না। আর বার করবি, এক্সএল বার করবি, তারপর লিখবি। আচ্ছা আমার যে ভোল্টেজ দেওয়াই আছে, তো আমি ডাইরেক্ট ভোল্টেজ দিয়ে করব, ঠিক আছে? Yes, sir. আচ্ছা এরপরে আরেকটা কোশ্চেন, এন্ড দিস ইজ দ্য লাস্ট কোশ্চেন ফর টুডে। খুব ভালো রেকর্ডিংও হলো আজকে। লাস্ট কোশ্চেন ফর টুডে, হ্যাঁ? নেক্সট দিন থেকে আমরা এলআর সিআর যা যা আছে সব করব। কোশ্চেন হচ্ছে a resistor 12 ohm, a capacitor reactance, a resistor 12 ohm, a capacitor of reactance 14 ohm, and an inductance 0.1 Henry are joined in series and placed across a 200 volt 50 hertz supply. 50 hertz हम लोग generally लेता है, because in our household circuit we use 50 hertz. हाँ, हमारे जो बारीक जो frequency है 50 hertz. Actually the actual frequency is 50 hertz with 5% error. Okay. Acha. You can take the value of pi 3, calculate. So আমি এটাকে একটু arrange করে নিই আগে। এটা হচ্ছে আমার সার্কিট ডায়াগ্রাম। ড্র করার দরকার নেই, তাও আমি ড্র করে দিলাম। প্লাস মাইনাস ই RCL, it is given, D is given 200 volt and frequency is given 50 hertz. Calculate current in the circuit. That means first you have to find out I, and nothing mentioned mane this is the peak RMS value. Number 2, phase difference between the current and voltage. Number 3, find VL, VC,
Vx Vr. Mention it why the algebraic sum is greater than the given value. माने तुमको ये दिखाना पड़ेगा algebraic sum माने Vr plus Vc plus Vl is greater than V. ऐसा क्यों होता है ये बोलो. This is the question. देखो ये सब का सिर्फ डराने के लिए है, बाप ने क्या क्या दे दिया है, ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ नहीं है. सिंपल थिंग, यू हैव R, यू हैव XC, XL नहीं है, सो XL निकालो, ओमेगा L that is 2 pi, फ्रीक्वेंसी L. एग्जामिनर अच्छा है, बोल दिया पाई का वैल्यू 3 लो, नॉट 3.14, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन जल्दी हो जाए. ऐसा क्वेश्चन इजी होता है, बोर्ड्स वगैरह में आता है या एंट्रेंस में आता है, बिकॉज कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है. 50 और ये दिया है 0.1, तो ये कितना हो गया, 3 into 100 into 0.1, that means 30 ohm. So your XL is 30 ohm. So what about XL minus XC? XL is 30 ohm, XC is 14 ohm, that is 16 ohm. So Z is how much? Root under R square plus X square, that is वही मैं सोच रहा था, अभी तक गया क्यों नहीं. কি হচ্ছে না এটাতে, বারবার উড়ে যাচ্ছে. So R is how much given? R কত দিয়েছিল রে? 12, 12 স্কয়ার, x কত আসছে 16, দুটো মিলিয়ে কত হবে 20. Yes or no? Yes, sir. So your Z is 20. Once you get Z, you have V. So I can easily find out V equals to IZ. I equals to V by Z. That is V is 200 by Z is 20. That is 10 ampere. Yes. Second one, I have to find out phi. Tan inverse X by R. Tan inverse X is how much? 16. R is how much? 12. Abar aslo tan inverse 4 by 3, 53 degree. Everyone satisfied? Yes, sir. Now, now we can find out VR. কত? কারেন্ট কত এসছে 10, রেজিস্ট্যান্স কত 12, তাহলে 120 ভোল্ট. VL 10 ইনটু কত 30, that is 300 volt. VC 10 into 14, that is 140 volt. VX কত 10 into 16, that is 160 volt. And obviously V কত, V হচ্ছে 200 volt. So if we add VR plus VC plus VL, that is 120 plus 140 plus 300, 560 volt, obviously, which is greater than 200. Why? Because it is not algebraic sum. ये क्या है? It is vector sum, है ना? कैसा vector sum? It is vector sum. कैसा vector sum? Vz is root under V of R square plus V of X square. ये दोनों को सम करो, 120 का स्क्वायर और Vx कितना आया 160 का स्क्वायर करो, 200 वोल्ट आएगा. देखो आ गया ना? Yes or no? Yes, sir. So justify your answer कि ये algebraic sum नहीं है,
अलजेब्रिक सम में वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये वेक्टर सम है जो कि vz इज रूट अंडर vx स्क्वायर vr स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। डन हो गया। 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर।